Hello students, welcome to Super 7 Revision Series Part 20. In this video, we will discuss some important questions where you have to give reasons. So, let us start with these questions. Question number 1. Why you never see any cattle or goats browsing on Calotropis plants? Goats and cattle Calotropis plant को consume नहीं करती हैं because this plant produces highly poisonous cardiac glycosides and this chemical makes the herbivore sick. Key point answer का है poisonous cardiac glycosides. So you have to write this point in this answer. यह एक अडेप्टिव मेथड है जो कैलोट्रोपिस प्लांट में प्रेजेंट होता है एंड प्लांट्स अपने आप को प्रीडेटर्स मीन्स हर्बीवोर्स एनिमल से सेव कर पाते हैं. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. वाई आर कैंसर पेशेंट्स ऑफन गिवन इंटरफेरॉन अल्फा एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट? कैंसर पेशेंट्स को अल्फा इंटरफेरॉन इसलिए दिया जाता है बिकॉज इंटरफेरॉन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है एंड ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है. सो अल्फा इंटरफेरॉन activates the immune system and help in destroying tumor cells. This is the answer. Note one important point. These interferon are also called as biological response modifiers. Question number 3. Why do toxic insecticidal proteins secreted by Bacillus thuringiensis does not kill the bacteria itself? जो टॉक्सिक प्रोटीन बेसिलस थुरिंजिएंसिस सिक्रीट करते हैं इट इज इन इनएक्टिव क्रिस्टलाइन फॉर्म और इन प्रोटॉक्सिन फॉर्म. डायग्राम में देखिए यू कैन सी बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल्स येलो कलर्ड क्रिस्टल बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड दस डज नॉट किल द बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 4. वाई इज इमेस्कुलेशन परफॉर्म्ड बाय plant breeders for artificial hybridization? First, let me tell you what is emasculation. Emasculation क्या है? It is the removal of anther from flower bud. You can see in diagram, forceps से anther को remove किया जा रहा है from the flower bud. लेकिन plant breeder emasculation क्यों करते हैं? It is done to ensure cross pollination by desired variety only and to get hybrid plants. So self pollination को रोकने के लिए and cross pollination को ensure करने के लिए emasculation किया जाता है so that hybrid plants with desired characters develop किए जा सकें. Clear? Question number 5. Why very small animals like hummingbirds not found in polar regions? Small size animals like hummingbirds polar region में नहीं पाए जाते because of the following reason. इनका सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है. दे हैव लार्ज सरफेस एरिया relative to their volume and because of this they tend to lose heat very fast when it is cold outside. So बहुत fast heat lost होता है from their body surface and they have to expend more energy to generate body heat through metabolism. बॉडी हीट जनरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इनको. दैट इज़ वाई दे आर नॉट फाउंड इन पोलार रीजन्स. क्वेश्चन नंबर 6. वाई डू क्लाउन फिश एंड सी एनिमॉन पेयर अप इन देयर हैबिटेट? सी द पिक्चर. बोथ क्लाउन फिश एंड सी एनिमॉन आर प्रेजेंट टुगेदर. यू कैन सी द स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमॉन. These tentacles give protection to clownfish and clownfish can save itself from predators. So अपने आप को predators से सेव करने के लिए clownfish sea anemone के साथ पेयर अप होती है लेकिन sea anemone को कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं होता. This relation between clownfish and sea anemone is called as commensalism. Question number 7. Why does endosperm development precede एम्ब्रियो डेवलपमेंट? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद ही एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट करता है बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो.
एंडोस्पर्म टिश्यू में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. दैट इज वाई एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 8. Why are certain groups of bacteria referred to as methanogens? Certain groups bacteria methanogens कहलाते हैं because when they grow on cellulosic material they produce large quantity of methane along with carbon dioxide and water. That is why they are called as methanogens, and one such common bacteria is Methanobacterium. Question 9. Why certain genes tend to be inherited together in a cell at the time of cell division? Certain genes tend to inherit together, or you can say they tend to move together because they are linked genes, or you can say they are linked together in the same chromosome. See the diagram. B gene and Z gene एक ही क्रोमोसोम पर हैं and they are linked genes and they tend to be inherited together in a cell at the time of cell division. Clear? Question number 10. Why do DNA fragments move towards anode during gel electrophoresis? DNA fragments anode की तरफ इसलिए मूव करते हैं क्योंकि DNA negatively charged होते हैं. So, because DNA fragments are negatively charged, they move towards anode under the electric field. Question number 11. Why mother's milk is considered very essential for the newborn infant? Mother's milk is considered very essential for newborn infant because the yellowish fluid colostrum is secreted by mother during initial days and it has abundant antibodies IgA to protect infant. Remember the name of antibody IgA. It increases immunity in the newborn infant. Question number 12. Why does Swiss cheese has large holes? Swiss cheese has large holes. You can see the picture of cheese with large holes in it. This is because the bacteria Propionibacterium shermani produces large amount of carbon dioxide and ये carbon dioxide चीज में large holes develop कर देती है. Clear? Question 13. Why is DNA preferred genetic material? Cells में DNA and RNA दोनों present होते हैं but DNA को genetic material prefer किया जाता है because DNA is chemically less reactive and structurally it is more stable, because of which DNA is preferred as genetic material. दोनों की पॉइंट्स नोट कर लीजिए. केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, ये दोनों पॉइंट्स आपको आंसर में मेंशन करने हैं. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाई इज प्लाज्मिड एन इम्पॉर्टेंट टूल इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स? Plasmids are extra chromosomal circular double stranded DNA present in bacteria and it is very important tool in biotechnology experiments because number 1, it acts as a vector or you can say it is a vehicle which transfer a piece of DNA attached to it in host cell, and number 2, it has ability to multiply or express the particular gene attached to it. So, that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.